So, hello everyone, and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. Continuing with the series of polity, we are doing the topic of fundamental rights, and today we are going to almost finish this topic of fundamental rights. Almost, I am saying, because after today's lecture, we will be left with only Article 31A onwards up till Article 30 we are going to finish by today's lecture. So, before we start, I would like you all to be prepared with your basic toolkit, that is your Bare Act of the Indian Constitution, your highlighter, your pen, and a copy. So, through the lectures, we just want to have conceptual clarity about each and every topic. Today, we are going to start with Article 23. The first pair of Article 23 and 24 in today's lecture. It's talking about right against exploitation. So, what is exploitation? In simple terms, if we just want to know the meaning of word exploitation, what does it imply? Exploitation means to exploit. Exploitation in simple language means to exploit. किसी चीज का नाजायज फायदा उठाना एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है. So, by inculcating this article in the constitution, we can just know what was in the mind of the framers of the constitution at the time of framing the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को एक आर्टिकल के तौर पे या एक सब्जेक्ट के तौर पे उसके ऊपर दो आर्टिकल्स बना डाले. हम समझ सकते हैं कि भारत की परिस्थिति उस टाइम पे क्या थी. तो व्हाट इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम और द फेज दैट व्हाट इंडिया वाज गोइंग थ्रू. सिंपली इफ आई से कि एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी का फायदा उठाना, तो हम जानते हैं कि उस दौर में उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे वर्ग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका फायदा उठाया जाता था. फायदा उठाने वाले चाहे इंडियंस थे चाहे ब्रिटिशर्स थे. हम ये नहीं कह सकते कि फायदा उठाने वाले सिर्फ के सिर्फ ब्रिटिशर्स थे. फायदा उठाने वाले इंडियंस भी थे. इंडियंस कैसे? लाइक जमींदार्स और लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो अपने आप को दूसरे ग्रुप से अपर समझते थे, ऊपर समझते थे. तो द बेसिक आइडिया अबाउट inculcating the articles in relation to exploitation was the history of India. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया. एक्सप्लॉयटेशन को पूरे तरीके से इंडिया से इरेडिकेट करने का एक निर्णय लिया गया और इस जरिए से एक्सप्लॉयटेशन को हम हिंदुस्तान से हमेशा के लिए निकाल देंगे. राइट? तो बेसिकली आर्टिकल 23 इज डीलिंग विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड forced labor.
तो व्हाट बेसिकली मींस ट्रैफिकिंग? तो ट्रैफिकिंग का सबसे पहला मतलब हमारे दिमाग में क्या आएगा? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, वी जस्ट मीन कि ह्यूमन बीइंग्स का सेल परचेज करना, ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेडिंग करना, ह्यूमन बीइंग्स में डीलिंग करना। तो उस टाइम पे जरूर ऐसा कुछ रहा होगा जिससे ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेडिंग करी जाती थी, जिससे ह्यूमन बीइंग्स में डील करी जाती थी। सो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेड करना या ह्यूमन बीइंग्स के साथ सेल परचेज करना इज प्रोहिबिटेड थ्रू दिस आर्टिकल. So the gist of Article 23 says there is a prohibition on trafficking in human beings. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. The very first part of Article 23 is dealing with trafficking in human beings, and the second part is dealing with forced labor. हम फोर्स्ड लेबर किसी व्यक्ति की कब कहेंगे? फोर्स्ड लेबर तभी होगी जब किसी आदमी की, किसी इंसान की बिना मर्जी से उससे कोई काम करवाया जाए, तो उसको हम कहेंगे ही इज फोर्स्ड टू डू सम लेबर, राइट? रीडिंग द आर्टिकल 23, prohibition of traffic in human beings and forced labor. The clause 1 says traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law. Either the labor is forced or the labor is unpaid. पहले समय में ये दौर होता था या इस तरीके से काम होता था, दासी सिस्टम चलता था, फ्री लेबर सिस्टम चलता था। किसी एक इंसान को ताउम्र के लिए खरीद लिया जाता था, किसी एक इंसान को बंदी बना के उससे काम करवाया जाता था, और इन रिटर्न ना तो उसको पैसा दिया जाता था और ना ही कुछ काइंड में दिया जाता था। ही वॉज नेवर पेड इन मनी नॉर इन काइंड। तो इसको हम फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में डालेंगे। Clause 2 says nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose. अब पब्लिक पर्पस के लिए कंपलसरी सर्विस अगर स्टेट इंपोज करती है तो ये आर्टिकल परव्यू में नहीं आएगा। एंड इन इंपोजिंग सच सर्विस द स्टेट शेल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। तो द क्लॉज 2 says the state cannot discriminate on the basis of religion, race, क्लास और कास्ट। ना तो तुम रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करोगे, ना रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करोगे, ना क्लास के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करोगे, और ना ही कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करोगे। आप इस प्रोविजन को, जो फर्स्ट प्रोविजन है इस आर्टिकल की, उसको बाईपास कर लो। फॉर पब्लिक पर्पस आप इसको भूल जाइए। स्टेट को पावर दी गई फॉर पब्लिक पर्पस, आप ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को भूल जाइए। क्लॉज 1 में जो प्रोविजन दी है उसको भूल जाइए। आप इसके विरुद्ध जा सकते हैं, पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेस के ऊपर। आई थिंक एंड आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। मैंने अब तक जो बोला वो आप सभी को अच्छे से समझ आया, राइट? तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 24
आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगर इस आर्टिकल की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे पूछूं हु इज अ चाइल्ड, तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट वुड कम इनटू योर माइंड? हु इज अ चाइल्ड? Just try to think over and you will say, sir, any person who is below 18 years is a child. आपका कहना ठीक भी है। हमारे इंडियन लॉज में हमारा फैक्ट्रीज एक्ट, हमारे लेबर लॉज एक वाइडर टर्म है देन फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट इटसेल्फ कम अंडर लेबर लॉज। हमारे ये एक्ट्स अभी रिसेंटली रिपील होके इनकी जगह पे एक नए एक्ट को भी लाया गया। तो अगर मैं बात करूं हमारे इन लेबर लॉज की, तो इंडिया में लेबर लॉज डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ एज। हमारे ये लॉज जो हैं ये डिफाइन करते हैं एक इंसान को तीन ग्रुप्स में। इनको उन्होंने तीन ग्रुप्स में बांटा: अ पर्सन हु इज बिलो 14 years of age, a person who is between 14 to 18 years of age, and person who is above 18 years of age. So let us just read this provision. Article 24 says prohibition of employment of children in factories, etc. No child below the age of 14 years shall be employed to work or in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. यानी कि जो हम चाइल्ड की डेफिनेशन 18 years समझ रहे थे, इट इज 14 years. Now, according to this article, any person who is 14 साल से कम, 14 years से कम, उसको किसी भी फैक्ट्री या किसी भी माइन या किसी भी हजार्डियस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं किया जाएगा। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। 14 साल से कम किसी भी बच्चे को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। Whatsoever the labor laws are saying about, but you cannot employ. It is the fundamental right against exploitation. एग्जाम्पल के तौर पे लू, आप बोलेंगे कि सर 14 साल से कम बच्चों को वैसे भी एम्प्लॉय कहाँ किया जाता है? तो वेन एवर यू गो इन टू मार्केट प्लेस, आप कुछ टी स्टॉल्स देखेंगे, वहां पर 14 साल से कम बच्चों को कई बार एम्प्लॉय करा जाता है। हमारे क्रैकर्स की फैक्ट्रीज जहां जहां होती हैं, दोज पीपल यूज लेबर who is below 14 years, or they often use the labor who is women. So basically, what is the idea, what is their thought behind using these persons in employment or labor? The basic thought and basic idea behind using these persons is, जो पटाखों में पटाश भरी जाती है, दे यूज टू, वो छोटे छोटे पटाखों में जो बच्चे होते हैं उनकी उंगलियां बहुत छोटी होती हैं, और द फीमेल्स हैव बहुत पतली पतली फिंगर्स। तो उनमें पटाश भरने के लिए वो पतली पतली फिंगर्स का काम या छोटी फिंगर्स का काम होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज देयर शुड बी नो एम्प्लॉयमेंट इन एनी वर्क प्लेस दैट माइट बी अ फैक्ट्री, अ माइन और एनी हजार्डियस ऑक्यूपेशन। 14 साल से कम बच्चों की कहीं भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम
सबसे पहले तो ये देखें कि जो आर्टिकल्स या जो पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के दिमाग में उस टाइम पे क्या आया और उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला। अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि इस आर्टिकल की कंसेप्ट क्या है, इस आर्टिकल का कहने का अभिप्राय क्या है। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन मेनी ऑफ इट्स रूलिंग्स हैज सेड कि आपको अगर किसी टर्म का मतलब देखना है, you need not to go into the grammatical meaning. In context to constitution, I am saying you need not to go into the grammatical meaning. You just have to see what was the intent of the framers of the constitution at the time of framing the constitution. उनके दिमाग में क्या था कि उन्होंने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो अगर हम ये देखें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स डिस्कस करे तो हमने ये भी डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्लियर ऑन द थॉट कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री बनेगा, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, इंडिया में हर तरीके के भांति भांति की रिलीजन के लोग रहेंगे। तो अगर इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाना था, अगर इंडिया को एक सेकुलर कंट्री उस टाइम पे बनाना था, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज मस्ट। अगर हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना होता तो जो भी पर्सन इन पावर होता वो हमारे ऊपर अपना रिलीजन थोपने की कोशिश करता। जैसे कि हमारे पिछले कुछ महाराजे राजे हुए जो अपने अंदर आने वाली प्रजा को अपने रिलीजन में आने के लिए फोर्स करते थे, एज वी रेड इन दी हिस्ट्री। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बेसिक थॉट, बेसिक आइडिया तो आया यहां से। अब व्हाट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट, let's read article 25. The bare reading of article 25 says freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, यानी कि आपकी बिलीफ की फ्रीडम, आप किस धर्म में मानते हैं उसकी फ्रीडम, आपकी किसी भी धर्म को मानने की, उसको फॉलो करने की, जो रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हैं उसकी फ्रीडम, आपको प्रैक्टिस करने की फ्रीडम, उस धर्म को, उस धर्म के राह पे चलने की फ्रीडम, उस धर्म के प्रोपोगेशन की फ्रीडम। तो बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एक बहुत वास्ट इंटरप्रिटेशन दे दी आर्टिकल 25 में। द क्लॉज 1 सेज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. So basically the word to be underlined here is all persons. Article 25 provides right to all the persons. It provides the right to all the persons. That means it is not important or it is not necessary that a person, for exercising his right to freedom of religion, should be or must be a citizen of India. He may or he may not be a citizen of India. Even a prisoner has the right to freedom of religion.
A terrorist has a right to freedom of religion. State cannot interfere. Now, the other words which are to be underlined or which are to be seen or which are to be given some importance here are subject to public order, morality, and health. Along with these words, the words to be seen are and the provision of and other provisions and the provision of this part. यानी कि पार्ट 3 में जो प्रोविजंस दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए या उनको पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए या इस पार्ट की बाकी की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए एवरी पर्सन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, टू प्रोफेस और टू प्रोपोगेट any religion he likes. State can only interfere in this right in the interest of public order, in the interest of morality, and the interest of health of people, and for giving effect to the other provision of this part. जो हमने प्रोविजंस अभी तक पढ़ी या आगे पढ़ेंगे तो उनको ध्यान में रखते हुए. Now, clause 2 of this article, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. अब इस प्रोविजन का जो लॉज हमारे इंडिया में चल रहे हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. और किसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा? ऐसे लॉज का जो कि सब क्लॉज ए और बी में दिए गए, रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग any economic, financial or political or other secular activity which may be associated with the religion practice. यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हो गई? These activities are economic, financial, and political. Economic, financial, and political activities. या फिर other secular activities. इसको कंट्रोल किया जा सकता है. Clause B, providing for social welfare and reform or for throwing open of Hindus religion institution of public character to all classes and sections of Hindu. यानी हिंदू रिलीजन को ओपन करने के लिए सभी हिंदूस के लिए. अब अगर मैं बात करूं द मेजर लॉ डीलिंग विद द हिंदू रिलीजन इज द हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट. कोई भी आप ये लॉ उठा के देखें उसमें टर्म हिंदू is given very wide interpretation. The word Hindu in itself includes Hindus who are Hindu by religion, all the Hindus who are Hindu by religion, Sikh, Jains, and Buddhist. So the term Hindu in itself include Hindu, Sikh, Jains, and Buddhist. Right? Now the explanation 1. The bearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion. Many times हमने देखा होगा हमारे सिख भाई किरपान वेयर करते हैं, तो इस किरपान के वेयर करने को, अपने साथ में रखने को, इट इज द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट
to profess their religion by way of keeping kirpan with them. Explanation 2. In subclause B of clause 2, the reference to Hindu shall be construed in including a reference to person professing the Sikh, Jains or Buddhist religion, and the reference to Hindu religion institution shall be construed accordingly. यानी कि हिंदू का मतलब सिख, बुद्धिस्ट और जैन प्लस हिंदूस, और हिंदू इंस्टीट्यूशंस का मतलब हिंदू वर्ड के साथ अगर आप इंस्टीट्यूशन लगा दें तो इन सब के साथ ही इंस्टीट्यूशन जुड़ जाएगा, उसका मतलब इस तरीके से पढ़ा जाएगा. Hindu institution will itself include Hindu institutions, Sikh institutions, Jain's institutions, and Buddhist institutions. I think all of you are clear till now. चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 26 की ओर. आर्टिकल 26 is freedom to manage religious affairs. अब subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to. Again ये तीन words subject to public order, morality and health, these words are to be kept in mind कि आपसे पूछ लिया जाता है किन किन बेसिस के ऊपर, किन किन बेसिस के ऊपर ये राइट अवेलेबल नहीं है. तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable person. ओके जी, चलिए देखिए. बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आर्टिकल 26. क्लॉज 1. सबसे पहले हमने एस्टैब्लिश करा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, देन आफ्टर हमने मेंटेन करना है. अगर एस्टैब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन भी करेंगे. राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन institution by religious denominations. Part B, sorry, it's A, right? Clause B, to manage its own affairs in matters of religion. अब अगर आपने कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करा, उसको मेंटेन कर रहे हैं, नाउ अब एस्टैब्लिश और मेंटेन करने के लिए यू नीड टू मैनेज द अफेयर. बी पार्ट में यू विल मैनेज द अफेयर्स. So you are managing the affairs. Part C, to own and acquire movable and immovable properties. अब आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आपने एस्टैब्लिश करा, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप उसको मैनेज कर रहे हैं. अब उसकी बढ़ोतरी के लिए आप उसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो खरीदेंगे. अब प्रॉपर्टीज खरीद ली, उसके बाद डी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ. ऑब्वियसली जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे उसको एडमिनिस्टर भी करेंगे, as and that administration should be as per the law. Simple. So what the article 26 is saying, article 26 say, firstly, every religious denomination has the right to establish religious institution. जब establish हो गया,
दे हैव द राइट टू मेंटेन। अब मेंटेन कर लिया, दे हैव द राइट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब मैनेज भी हो गए अफेयर्स, दे हैव द राइट टू परचेज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज ले ली, दे हैव राइट टू एडमिनिस्टर the movable as well as immovable properties so purchased. Now coming to your article 27. Article 27 says freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. Simply पहले क्या किया जाता था, राजे महाराजे या हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम की पहले की बात कर रहा हूं, तो जो राजे महाराजे थे, अपनी रिलीजन को दूसरे के ऊपर थोपा जाता था। वो किस तरीके से, वो कहते थे या तो हमारा रिलीजन फॉलो कीजिए, अगर आपको कोई दूसरा रिलीजन फॉलो करना है देन यू हैव टू पे सर्टेन टैक्स बिकॉज यू आर फॉलोइंग रिलीजन अदर देन आर्स। यानी कि या तो आप रिलीजन ए को फॉलो कीजिए। अब मान लीजिए राजा साहब की रिलीजन है रिलीजन ए, दिस इज द रिलीजन ऑफ क्राउन। ये क्राउन बना देते हैं इसमें, दिस इज द रिलीजन ऑफ क्राउन। अब ये राजा साहब कहते हैं या तो आप सब ये सारी प्रजा जो है या रिलीजन ए फॉलो करे, अगर इसको आधे लोग रिलीजन ए फॉलो करते हैं और आधे रिलीजन बी फॉलो करते हैं तो इनके ऊपर नो टैक्स। रिलीजन फॉलो करने वालों के ऊपर टैक्स जब तक ये रिलीजन बी फॉलो करते रहेंगे। जब ये रिलीजन ए में आ गए देन दे आर हैविंग नो टैक्स लायबिलिटी। So the basic idea behind inculcating this article into constitution was that no tax should be imposed because a person is following one religion. Article 27 reads as freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. यानी कि एक इंसान यदि कुछ खर्चा करता है अपनी रिलीजन के प्रमोशन के लिए या रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए, तो उसके ऊपर इस वजह से कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 28. Article 28 says freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. हम सब जब बच्चे थे स्कूल्स में जाते थे और स्कूल में एंटर करते ही क्लास में बैग, क्लासरूम में भागना, बैग रख देना, और बैग रखते ही एक बेल होती थी प्रेयर के लिए, सो दैट एवरीवन शुड गैदर इनटू द प्रेयर असेंबली और 15 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की प्रेयर की जाए। जब मैं स्कूल टाइम में था तो हम बैग रख के उस टाइम पर छुप जाया करते थे ताकि हमें कोई देख ना ले और हमें नीचे प्रेयर के लिए जाना ना पड़े। तो ये आर्टिकल को इस कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा। Article 28 says freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. Clause 1 says no religious instructions shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of the state fund. अब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होली आउट ऑफ स्टेट फंड मेंटेन किए जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। Clause 2 says nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment
or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. अब या तो स्टेट ने खुद ही कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रन करना है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगी अनलेस वो एक ट्रस्ट द्वारा बनाया गया हो जिसका मकसद ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना हो. Clause 3. No person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of the state funds shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institution, or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto, unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto. यानी कि किसी भी religious institution में they cannot force you to attend religious worship. If a person is a minor, तो उसके गार्डियंस का कंसेंट नेसेसरी है. अगर पर्सन इज अ मेजर तो उसका खुद का कंसेंट नेसेसरी है. आर्टिकल 29 and article 30 of the constitution are dealing with cultural and educational rights. The next two articles that we are covering today are article 29 and 30. Article 31 itself is omitted from the constitution. So, starting with article 29, cultural and educational rights, protection of interest of minorities. Clause 1 says any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof any section of citizens meaning is clear thereby. This right is available to any section of citizens residing in the territory of India or in any part thereof having a distinct language, script or culture. They are having distinct language, script or culture. They are having distinct language, distinct script or distinct culture of its own shall have the right to conserve the same. They have the right to conserve their script, language and culture, right? Clause 2 of this article says no citizen shall be denied of admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of the religion, race, caste, language or any of them. Now let's understand this article with the help of an example. Suppose there is a school in your society and that school is having a good repute. You want to join that school. You can take the example of a school or a college as well. Whatsoever is the educational institution, you just want to
join that educational institution. And there is a formality that before joining that educational institution, you just have to fill a form. You just have to fill a form and they will scrutinize your form. They will scrutinize your form. And after a scrutiny, they will select that either they will accept your admission or they are not going to accept your admission in that educational institution. So basically, they have the authority to reject your application or to accept your application. Then what we can say, if they reject your application, you are denied of your right to education. No, आप बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ाया कि हमें कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो मना नहीं करेगा कि आपको जो है आपका राइट टू एजुकेशन है, वो आपका राइट टू एजुकेशन जो है वो वहां जाकर इन्फ्रिंज हो जाएगा. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल मैं कहता हूं कि आपका राइट टू एजुकेशन जो है वो इन्फ्रिंज नहीं हुआ. वो कैसे इन्फ्रिंज नहीं हुआ? बिकॉज इस आर्टिकल में उन्होंने क्लियरली बता दिया. इस आर्टिकल में मैं कहता हूं उन्होंने क्लियरली बता दिया, यू कैन नॉट बी डिनाइड योर right to admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste और लैंग्वेज. अब उन्होंने जो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी, that could be on the basis of merit, that could be on the basis of interview, but that could not be on the basis of religion, that could not be on the basis of race, that could not be on the basis of caste, and that could not be on the basis of language. अगर इन चारों में से है कोई एक कारण आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का, then definitely your fundamental rights is infringed. You can move to Supreme Court, you can move to High Court, exercising your writ jurisdiction. Right? The second condition of this infringement is that educational is wholly or partly maintained by the state funds or by the grants from the state. Right? Then next is your Article 30. It talks about right of minorities to establish and administer educational institution. The very first clause says all the minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. Now, what the minorities are? You can see in India there are different types of minorities. You can say कुछ लोग जहां मान लीजिए दिस इज द एरिया, the maximum area is occupied by population belonging to A group, rest of is occupied by B, and this one is occupied by C, and D is only left with this much of population. So if you can arrange in decreasing order, A comes first, A is greater than B, is greater than C, and greater than D.
D is in the last. So D could be the minority in entire section or in the entire area. अब हो सकता है कि ए बी के साथ मिलकर सी और डी को दबाने की कोशिश करे, ए बी सी तीनों मिलकर डी को दबाने की कोशिश करें, तो वो राइट्स जो डी के हैं वो कहीं दबे ना। ए अपनी सिर्फ आबादी की वजह से डी के ऊपर हावी ना हो जाए, ए बी सी तीनों मिलकर डी के ऊपर हावी ना हो जाए, या ए बी मिलकर सी के ऊपर हावी ना हो जाए। इस वजह से माइनॉरिटीज का कंसेप्ट जो है हमारे इंडिया में आया, टू डिक्लेयर देम माइनॉरिटीज, और उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स उनको दे देना। अब आर्टिकल 30 डील्स विद प्रोवाइडिंग सम स्पेशल राइट्स टू द माइनॉरिटीज. The minorities are having the right to establish and administer the educational institution of their own choice. Clause 1A. In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under this clause. अब मान लीजिए डी को राइट दे दिया, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डी ने क्या करा, डी ने अपना एक छोटा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया इस एरिया में, ये पूरा एरिया था, डी ने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया। अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने बोला कि यहां से तो हम रोड पास करेंगे और ये प्रॉपर्टी की कंपलसरी एक्विजिशन होगी। अब इस प्रॉपर्टी की जब कंपलसरी एक्विजिशन होगी तो जो अमाउंट फिक्स करी जाएगी कंपनसेशन की, वो इस हिसाब से फिक्स करी जाएगी कि डी का जो राइट हमने दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का, वो कहीं इन्फ्रिंज ना हो जाए, वो कहीं जाया ना हो जाए। इट शुड बी सफिशिएंट कि डी यहां से जगह उठाकर दूसरी जगह में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दे। अब ये भी हो सकता है कि बाकी की जगह ए को बिलोंग करती हो और ए उस जगह को भाव जो है उस जगह के वो इतने बढ़ा दे कि डी अफोर्ड ही ना कर पाए। इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन जस्ट थिंक ऑफ इट कि जानबूझ के सरकार भी ए की, सरकार ने उसको राइट दे दिया कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना लो। अब सरकार ने जानबूझ के राइट तो दे दिया, पर जानबूझ के उधर से सड़क पास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां से कंपलसरी एक्वायर कर लिया और कंपनसेशन दे दी सिर्फ नाम की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन बना दिया गया कि ये जो कंपनसेशन है ये इतना एडिक्वेट होना चाहिए कि ये देखा जाए क्लॉज 1 में जो हमने उसको राइट दिया कहीं वो हम उससे छीन ना लें। क्लॉज 2, the state shall not in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language. अब मान लीजिए इस एरिया में 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, दिस वन बिलोंग्स टू ए बी सी एंड डी। अब स्टेट क्या करेगी, स्टेट इन चारों को ग्रांट्स दे रही है, तो स्टेट जब इन चारों को ग्रांट देगी तो स्टेट कैन नॉट एंड स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड दैट दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, राइट। सबको एट पार रखकर देखा जाएगा। सो दैट वाज ऑल up till your article 30, or you can say the article 31, which is now omitted by the 44th Amendment Act. Now let us just try to solve some of the questions
The very first question is, consider consider pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. The Constitution of India, pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, SANYAL, H.N. Sanyal Committee, Contempt of Courts एक्ट जो था वो पास किया गया था. The second one is, the Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves. High Court और Supreme Court की पावर आ गई to punish for its contempt. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. Civil और criminal contempt कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिफाइन करा गया. In India, the parliament is vested with the power to make bars on laws on contempt of court. Parliament can make law on contempt of courts. Just look at this question. Not typically from any of the provision. A very simple question, or you can say this question is entirely based on your GK. Now, what the options you have? Which of these is correct? Either A and B. Second option is A, B and C. Third option is C and D. And fourth option is C only. Just look at this question and try to find out which in your opinion is wrong one. So when you are looking at the options available to you, Parliament can make laws on contempt of court. The provision in relation to contempt of court is a subject that can be legislated by the Parliament. Parliament can legislate on the contempt of court. तो बेसिकली ये हमारा तो बिल्कुल ठीक है. इन सब में डी आ रहा है सिर्फ सी के साथ. डी इज द करेक्ट वन, बट डी आ रहा है सी के साथ. सी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट को. नो, दिस इज रॉन्ग. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट.
Yes, they do have. This is correct. एचएन सिंह कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट बनाया गया था इनकी रिकमेंडेशन पर। इट माइट बी, यू कैन जस्ट गेस। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास करेक्ट आ रहे हैं। तो द आंसर हेयर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड डी। So it's A, B, and D here. It's D, right? The next question to practice is which of the following are exclusive powers of the parliament? Which is the exclusive power of parliament? To amend constitution, to amend the constitution, to amend preamble, to amend fundamental rights. None. You have the options A and B, A, B, and C, A, B, C, and D, D only. So the parliament has the power to amend the constitution. The parliament's power to amend the constitution extends to amend the preamble and the fundamental rights as well. Right? The correct option is third. Now, let's discuss a theoretical question for your mains examination. The fundamental rights in Indian constitution are borrowed from foreign culture with Indian mix. Discuss. Yes, the fundamental rights are borrowed from external source, but still they are a mix of Indian culture. So you just have to answer this question in relation to the difference in the fundamental rights or the entire differentiation in the fundamental rights of the other countries and the Indian. Then next is your the fundamental rights are
guaranteed as protection from actions of state, but they are not absolute. Discuss. The fundamental rights are not absolute. They protect the actions. They protect us from the actions of the state, from the discretionary actions of the state. But still, the fundamental rights are not absolute in nature. The state can itself, in the cases of public order, morality, or health, or certain other emergencies, can take away or abrogate these fundamental rights. You just have to discuss the provisions in detail. This is all for today. Thank you. Have a nice day. Hope your preparations are going in full speed and in very good manner. See you in the next lecture. Thank you.